चलो। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वड़क्कम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम सागर माली और आज हम लोग बात करने वाले हैं रीबर्थ ऑफ माय रेड बुल। भाई ये वीडियो स्किप ना करते हुए पूरा देखना, क्योंकि आपको भी बता दूं कि क्या क्या कंडीशंस हुई थी। एंड चैनल पे नए हुए या अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दो एंड सपोर्ट करते रहो ऐसे ही। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो यू ऑल गाइस मस्ट नो दैट आई ओन रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350X ABS वर्जन। मेरे लाइफ की, मेरे ज़िंदगी की सबसे पहली इनकम में से ली हुई मैंने खुद के लिए ये एक चीज़ है, बिकॉज आई वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट बाइक्स। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग दैट आई बॉट on 10th June 2019. The bike's performance is awesome. It's a combination of daily commute and a cruiser bike. The sitting posture is very comfortable for a tall rider like me. I am 6.4. I handled this bike for 47 days. In 47 days I took the bike from jungles, rough patches, off-roads, mountains, ghats and whatnot. But this date, 27 July 2019. It started from 26 July, continuous and heavy rains, roadways and railways were totally messed up. उल्लास रिवर जो कि मेरे घर से अराउंड 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे फ्लो होती है, दैट वाज आल्सो स्वेलिंग अप एंड दैट नाइट वी वोक अप. रात के 3:30 बजे की बात है जब वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन आवर कॉम्प्लेक्स. उस वक्त हमारे कॉम्प्लेक्स से निकलने के लिए 2 रास्ते थे, बट बोथ द रोड्स वर टोटली ब्लॉक्ड बिकॉज वहाँ पे पानी अराउंड 3 फीट तक भर चुका था, बिकॉज दे आर लिटिल लो फ्रॉम आवर कॉम्प्लेक्स ग्राउंड लेवल. फॉर्चुनेटली आई स्टे ऑन 7th फ्लोर, तो पानी की वजह से घर में कुछ तकलीफ नहीं हुई. रादर किसी के घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ बिकॉज एवरीबडी स्टेज फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर. हमारे कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर इज स्ट्रीट पार्किंग, एक भी घर नहीं है ग्राउंड फ्लोर में. बट मेरे बाइक्स एंड कार्स, पानी की लेवल देखते देखते बढ़ने लगी एंड अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग वाटर वॉज ऑलमोस्ट 5 feet 7 inches हाई. History repeats itself. 26 July 2005, मेगा फ्लड्स इन मुंबई एंड उसकी एक छोटी सी झलक आज हमें वापस दिखाई दे रही थी एग्जैक्टली 14 years and 1 day के बाद, 27 July 2019. Yes, we were in a flood situation again. The Royal Enfield Thunderbird 350X ABS, my beloved and pampered machine, was underwater. 28 July 2019 को, यानी कि नेक्स्ट डे, फ्लड्स टोटली आउटफ्लो हो चुका था, पानी पूरी तरह निकल चुका था, बट what remained was a total mess. माई बाइक वॉज फाइनली हैंडेड ओवर टू रॉयल एनफील्ड ऑथोराइज सर्विस सेंटर, जो कि मेरे ही सिटी में है, लेकिन आई स्टे इन वेस्ट एंड सर्विस सेंटर ईस्ट में है. ये जो बीच के जो दिन थे, दैट वाज अ टोटल पेन. एवरी डे आई यूज्ड टू गो इन द वर्कशॉप एंड सी माई बाइक स्टैंडिंग ओवर देयर. नॉट जस्ट माई बाइक, ऐसे कम से कम 50 से 60 रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ वहाँ पे आई थी, विच वर अंडर इंश्योरेंस.
तो और वक्त ज़ाया न करते हुए चलिए लेट्स गो एंड गेट द बाइक। Seeing my bike after so many days surely made a sentimental moment for me. 24 दिनों की कठिन प्रतीक्षा के बाद आई एम फाइनली गेटिंग माई बाइक होम टुडे, सो या दैट वाज गुड। The 346cc massive block just thrown out its maximum power of 20 bhp and oh my god, that was a relief. That sound was a relief to my ears. So finally we brought the bike home. तो चलिए आप एंजॉय कीजिए रेड बीस्ट के कुछ शॉट्स। तो बाइक घर आने के बाद कुछ रिचुअल्स हुए, बाइक की फ़ोटो शोटो निकाली गई। मैं उसके पास देख रहा था तो इट फेल्ट लाइक शी वॉज क्राइंग, शी वॉज डिमांडिंग इट। द रोड्स, द विंड, द pistons were screaming to pump. Let's get ready. Let's go. Hyper ready. मैंने जानबूझ के वीडियो लेट बनाया। अब अक्टूबर मंथ का एंडिंग है। आई टुक अराउंड 2 months आई जस्ट रोड द बाइक। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने तक मैंने सोचा था कि आई वॉन्ट मेक दिस वीडियो, रीबर्थ का वीडियो, बट नाउ आई कैन टोटली से दैट आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन आफ्टर दिस इंसिडेंट। स्पेशल थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड ऑथोराइज सर्विस सेंटर नेम्ड एज पूजा मोटर्स, जो कि बदलापुर ईस्ट में है। वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर निखिल पवार, जो कि वहाँ के सर्विस हेड है। उन्होंने बहुत हेल्प किया एंड माई बाइक वॉज द फर्स्ट EBS वर्जन बाइक टू गेट रिलीज।